Hello students, today we are starting one more chapter, that is gravitation, and I will start with the law of gravitation. What is gravitational force and what is the law about that? Popularly known as Newton's law of gravitation. To start with, I must tell you something about gravitation. You see, the universe is filled with the objects: Earth, the sun, the stars, the galaxies, the moon, Jupiter, planets of the sun, and moons of the planets. How they revolve around each other? Why should the planets revolve around the sun? How the planets, these moons revolve around the planets, or how the galaxies are formed? It is all because of gravitation. Long range force between objects. The two objects in the universe, two objects having mass, two particles, two objects, two bodies. Maybe they are as small as electrons, maybe they are as big as the galaxies. There is always a force between them, between two electrons, between two protons, between two atoms, between two molecules, between Earth and the sun, between sun and the stars. This force is between the two bodies because of their mass. किसी चीज का भी अगर मास है, किसी दो बॉडीज का भी अगर मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन को जो मास की वजह से होता है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. Two objects attract each other because of this, because of their mass and because of the distance between them. So this force depends on the masses and the distance between the two masses. This is what we call as gravitational force. This is basically gravitational force, a weak force. It is weakest of all the possible forces that we know. मगर ये force बहुत important है because it is meaningful between the heavenly bodies, between Earth, Sun, the stars, because they are very massive. तो उस वजह से ये force बहुत ही important हो जाता है. It is of course the weak force, weakest of all the possible forces. We do have natural forces like electromagnetic forces, nuclear forces, weak interacting forces inside the nucleus, and gravitational force also. These are four fundamental forces that we have in the universe. But this force, this gravitational force, is the weakest of all these forces. Let me start with the law of gravitation. अगर दो बॉडीज में फोर्स है, दो बॉडीज जिनका मास है, अगर इनके दरमियान फोर्स है, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो किस फैक्टर पर, ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट फोर्स डिपेंड्स, तो उस चीज को हम करना चाहेंगे. Point number second, yes, I have already told it's the weak force. It is a weak force, and it is a conservative force that we will discuss a little later. But first of all, let me formulate its law. What is the law of gravitation? First, law of gravitation. Law of gravitation. Law of gravitation, popularly known as Newton's law. Newton's law of gravitation. दो बॉडीज, टू इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं, दो प्रोटॉन हो सकते हैं, अर्थ स्टार हो सकता है, अर्थ सन हो सकता है, सन मून हो सकता है, इवन बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज वी हैव मास, हमारे दरमियान भी ये ग्रेविटेशन फोर्स है. हमारा मास कम है तो इस वजह से ये फोर्स नेग्लिजिबल है. तो ये दो बॉडीज लीजिए, यहां पर दो बॉडीज, इसका मास m1 समझो, इसका मास m2 समझो, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट्स r. डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी. ऐसा नहीं कि डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, इट इज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. तो व्हाट इज द फोर्स? जैसे किताब में लिखा होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, and of course there's a gravitational constant.
तो मैथमेटिकली लिखा जा सकता है द फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज दैट इज G m1 m2 by r square. दिस इज द लॉ. ये फोर्स जो है ये दो मासेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, और ये दो मासेस आपस में कितना दूर है तो उस पर डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा दूर है तो फोर्स कम हो जाएगा ऑब्वियसली. जब बहुत दूर है एक दूसरे से तो फोर्स तो कम हो ही जाएगा, और अगर नजदीक है तो यही फोर्स बढ़ जाता है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट. वाई G इज अ कांस्टेंट. ये G जो है इज अ कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मास kg स्क्वायर. ये इसके यूनिट्स है. तो इसका जो वैल्यू है बहुत ही कम है, और इस वजह से फोर्स भी कम है. आप निकाल सकते हैं अगर दो बॉडीज एक kg का मास है, 1 kg और इनके दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 1 kg 1 मीटर का डिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर, तो वो हो गया G न्यूटन 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन. तो यू कैन वेल इमेजिन अगर दो बॉडीज है उनका मास दोनों का 1 kg है और साथ में इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो फोर्स कितना ही है, बहुत ही कम है, 6.67 10 पावर माइनस 11. दैट्स अ वेरी स्मॉल फोर्स, कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल फोर्स. सो दैट्स व्हाई आई से दिस इज अ वेरी वीक फोर्स. अब दिस बिकम्स मीनिंगफुल वजह यह है कि बिकॉज इट एग्जिस्ट बिटवीन हेवनली बॉडीज आल्सो, अर्थ और सन, बिकॉज ऑफ देयर मास द फोर्स इज मीनिंगफुल, a good measurable quantity. And this force is a vector, obviously force is a vector, so there must be some direction. So this body attracts this body with the force that is towards along the line joining their centers, और इस पर force है इस direction में. This is F force on this 1 2 force on 1 due to the second body, and this is F21. Of course Newton's third law के हिसाब से F12 should be equal to minus F21. तो every action there is equal and opposite direction. ये दो forces बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उल्टा है, अपोजिट है. So gravitational force का डायरेक्शन जो हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्या, there is a real direction. The direction of the force is along the line joining their centers, joining the centers of the two bodies, and this force is attractive, means it is along like this and like this, not away and away. They pull each other towards each other. They don't push away each other, they pull away, pull each other towards each other. वो एक दूसरे को पुल करते हैं एक दूसरे के साथ. अच्छा, तो यहां मैं ये लिखना चाहूंगा, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज. It should be written here. The direction of gravitational force is along the line joining the centers of the two bodies. सेंटर से सेंटर ऑफ मासेस, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जो लिखा होता है किताब में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. एंड व्हेन वी राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म, वी राइट लाइक दिस. दिस G is called gravitational constant. It is a universal gravitational constant. Universal means, you see, the gravitational force does not depend upon the medium. Suppose these are the two masses. इनके दरमियान फोर्स है, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स है. 10 न्यूटन कहाँ होगा, सपोज कुछ फोर्स है इनके दरमियान, टू बॉडीज के दरमियान न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है. लेट मी सपोज समथिंग, बिकॉज आई कैन नॉट गिव द मैग्नीट्यूड, बिकॉज फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. अगर मैं बीच में कुछ मीडियम रखूंगा, वाटर रखूंगा, कुछ ऑयल रखूंगा या कुछ मटेरियल रखूंगा बीच में, इन दो के दरमियान जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा.
So that is why this G is called universal gravitational constant. You can't have a gravitational wall in between. ये दो बॉडीज है, बीच में कोई वॉल मैंने खड़ा कर दिया, अब इन दो बॉडीज के दरमियान फोर्स चेंज होगा, ऐसा नहीं है. दो बॉडीज है, इनके दरमियान जो फोर्स है, बीच में वॉल होगा, कुछ भी होगा, वाटर होगा, कुछ भी होगा, तो फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज इज unaffected by the medium. You may change the medium, but force is the same. So that's why we call this G the universal gravitational constant. It's called universal gravitational constant. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, वहां जो कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि जो दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है, इसलिए वहां हम कांस्टेंट को मीडियम डिपेंडेंट स्टेट करते हैं, that depends on the medium. But here this G is universal gravitational constant. It does not depend upon the medium. So G is medium independent. Medium independent. Okay? Point number one. Now second is, you see, now let us come to the example of the earth. Of course we know the gravitational force between any two bodies is given by the same formula, gm1 m2 by r square. We can find the gravitational force between sun and the earth. Knowing the mass of the earth, knowing the mass of the sun, distance between them, we can find the force. And every force causes acceleration in a body. That is the property of every force. If you apply any force on a body, that accelerates. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है किसी बॉडी पर, तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, और उस एक्सेलरेशन को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज दैट एक्सेलरेशन हैज बीन कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वी कॉल दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉपुलरली, और जैसे वो मेंशन किया होता है बुक्स में. Number second, suppose if it is our earth of radius r, mass m, is an object here, its mass is m, right? And distance between the object and the earth is r, small r, and the object lies outside the earth. So I can write here r, okay, greater or equal to capital R, means the object is either on the surface of the earth or above the surface of the earth outside. So for that we write r, small r is greater or equal to capital R. What is the force on this small object due to the earth in this direction towards the center of the earth? अर्थ पर भी फोर्स होगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, लेकिन अर्थ मैसिव है तो इसका एक्सेलरेशन टेंडिंग टू जीरो. इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि जो इस पर फोर्स होगा उस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, और अर्थ का एक्सेलरेशन उसी आपको फोर्स इज द सेम. अगर इस पर 10 न्यूटन का फोर्स है, अर्थ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अर्थ चूंकि मैसिव है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन इसका टेंडिंग टू जीरो होगा. Now let me find the force here on this object. Okay, the force on that object is G, capital mass of the earth, small m mass of the object by r square. This is the force on the object, this due to the earth. जैसे ये है earth, ये है object, the force on this object is this. But capital mass is the mass of the earth, small mass is the mass of the object, and small r is the distance from the center of the earth, not from the surface, from the center of the earth to the center of the object, that is r. Okay, now what is the acceleration of this object? The acceleration of the object A is equal to F, this force by mass, mass of the object, not mass of the earth, जिसका acceleration होगा उसी का mass divide होगा, is equal to G, capital M, small m by r square divided by this m. M gets cancelled. What is the acceleration? Now this acceleration is popularly known as G. Why? Because it is acceleration due to the force of gravity. इसलिए इसका हमने नाम G रखा है. Otherwise it is the same acceleration. That is G M by r square, where r is greater or equal to capital R. ये आप फॉर्मूला जो है acceleration के लिए, acceleration due to gravity of the earth, acceleration due to gravity, it is G capital M by r square. मगर this M is mass of the earth, right?
एंड दिस r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर जब आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन गौर से जब हम देखेंगे, इसमें स्मॉल m नहीं है, इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें मास ऑफ द अर्थ है। या इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किसी ऑब्जेक्ट का भी, वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इस इक्वेशन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend upon the mass of the object. It depends on the mass of the earth, but it does not depend upon the mass of that object which is accelerated. So acceleration due to gravity does not depend on mass of the object. It depends upon r, no doubt. इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, सेम लेवल पर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, सेम लेवल पर, ये हैवी ऑब्जेक्ट है या लाइट ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ, ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये लाइट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इनको रिलीज करूंगा टुवर्ड्स द अर्थ, दे विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ साइमल्टेनियसली, बिकॉज इस पर जो एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, ये मैसिव है, ये लाइट है, लेकिन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। इसका मतलब दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, नंबर वन। नंबर सेकेंड, this r is this distance. Suppose this object is not here, it is very closer to the surface of the earth, or it is just on the surface of the earth. उस सूरत में what is the acceleration due to gravity when the body is on the surface of the earth? Acceleration due to gravity when the body is on the surface of the earth. Acceleration due to gravity on the surface of the earth. कैसे लिखेंगे? अगर बॉडी यहां है, सरफेस पर ही है बॉडी, तो उस पर एक्सेलरेशन क्या है? या नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस बॉडी सरफेस पर है तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन हमें देखना है कि ग्रेविटेशन की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन वुड हैव बीन एब्सेंट, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपने अर्थ के नजदीक इसको रखना है और रिलीज करना है, तो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, दैट इज gm बाय स्मॉल r स्क्वायर। नहीं, अब देखना है कि यहां से कितना डिस्टेंस दूर है यार ऑब्जेक्ट, दैट इज कैपिटल R, तो यहां r स्क्वायर होगा। हियर r इज इक्वल टू कैपिटल R। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन इनमें सारा जो आपको पता है, g भी पता है, m भी पता है, r भी पता है, जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब मास ऑफ द अर्थ अगर आपको पता होगा तो मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 24 kg। अगर r की बात की जाए तो 6.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 मीटर्स, 6,400 किलोमीटर्स। तो g का वैल्यू पता है, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 kg, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इन चीजों को सब्स्टिट्यूट करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इफ यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इट शुड बी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर बहुत ऊपर आप जाएंगे, thousands of kilometers away from the surface of the earth, obviously the acceleration due to gravity will be different at different positions in space, but near the surface of the earth is 9.8, because यहां r का वैल्यू हमने कैपिटल R दिया है, वहां आपको r का वैल्यू इसी तरह से एडजस्ट होगा जितने दूर है आप अर्थ के सेंटर से। अच्छा, लेकिन हम और एक इक्वेशन देना चाहेंगे, g इज इक्वल टू g बाय r स्क्वायर। अगर अर्थ को एक स्फीयर लिया जाए तो m का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर m? 4/3 pi r cube, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, आर स्क्वायर और ऊपर आर क्यूब, तो आर ऊपर मिलेगा, दैट इज 4 पाई जी रो पहले आर बाय 3. This is one more equation of acceleration due to gravity near the surface of the earth in terms of density of the earth. Of course, density of the earth is not supposed to be uniform. Some parts of the earth are highly dense, some parts are low density. Water has some density because earth contains mostly water. So, but this rho is the density of the earth. Why rho is density of earth. This is acceleration due to gravity, 4 pi by 3 g rho r, and here g is equal to gm by r square. अगर हमारे पास दो प्लैनेट्स है, दो हेवनली बॉडीज है, अगर उनका मास सेम है, उन दो बॉडीज का मास सेम है, तो जिसका रेडियस ज्यादा है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस फॉर सेम मास ऑफ द टू प्लैनेट्स. अगर दो प्लैनेट्स का मास नहीं, डेंसिटी सेम होगा, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू आर. जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसी का डेंसिटी, उसी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा. So for constant density of the two planets or two objects, acceleration due to gravity is directly proportional to r. For two planets having the same mass, then acceleration due to gravity is inversely proportional to square of the radius of that planet. अगर आपको किसी प्लेनेट का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो, जैसे अगर हम मून पर देखिए, मून की वजह से मून पर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां क्या करना पड़ेगा, जी तो सेम है, हियर मास ऑफ द मून, here radius of the moon, square of that. तो जब आप निकालोगे तो acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6 that of the earth. वो इसलिए है कि mass of the moon भी कम है, 81 times less than that of the earth. Our earth is 81 times more than the mass of the moon. तो radius भी different है वहां. तो उस वजह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6 that of the earth. This was the introductory lecture, and I'll be completing this gravitation in 15 to 18 lectures with all the objectives and problems on it. I want that you continue to watch the lectures on the YouTube, and if you want to download my app from the Google Store, there also there are many problems and objectives on this gravitation. Thank you.